There. One is here somewhere now, I can't locate. So I met a crazy bunch of lovers who don't really understand how the world works. And so this song is about one of those people who just doesn't get it. The world has been telling them practical हो जाओ, पर वो practical ही नहीं. दुनिया बता रही है कि यहाँ पे टैक्स रिडक्शन होता है और सेव होता है SIP something SIP. She doesn't know, only she's like, okay, whatever. I have money, I'm going to make another song. Or I'll go and make like a party with my nice people. Give them a second to breathe and breathe with them. So this song is inspired by that crazy person. And the person is claiming कि वो पागल नहीं है, वो असल में प्रेमी है, वो प्यार को अलग तरह देखती है, कहानियां सुनाती है, लेकिन दुनिया कह रही है पागल है. तो आप सुनिए कि वो क्या कर रही है, फिर आप ही बताइए कि ये झल्ली अजीब सी दिखने वाली प्रेमी है या पागल. तो एक लड़की थी, यूं ही बिना किसी काम के मिट्टी खोदने लगती, फिर उसमें बीज डालती, खाद डालती, पानी डालती, उसे सेती, और जैसे ही कोपल फूटने लगती किसी और प्रेमी के हाथ में थमा करके आगे बढ़ जाती. सीमेंट मिट्टी ईंटा ढोती और घर बनाती. घर में एक चीज, चटाई पर्दे तकिए सजाती, पर फिर जैसे ही घर बसने लगता बस्ता बांधती और निकल पड़ती. अब आप ही बताइए, ये झल्ली अल्हड़ पगली प्रेमी थी बस, या कोई अजूबा. फूल ना जाने फल ना ढूंढे, अल्हड़ हुई बेकार. हुई दीवानी एक न माने माटी लगे सुधार. हाँ जी, फूल ना जाने फल ना ढूंढे, अल्हड़ हुई बेकार. आपको बताए जाएंगे लक्षण देख करके आपको बताना है कि जवाब क्या है. पर चिंता मत कीजिए, इस दुनिया में लक्षण हजार हैं, दिक्कतें हजार हैं, लेकिन दिक्कतों की वजह है बस एक. तो एक बार जवाब पता चल गया तो काफी. दूध चढ़ाए छोड़ के भूले आए थे ज़ुबान. Now we put the milk to boil and forgotten about it. Of course the milk has boiled over, it's boiled. And now I wonder who's to be blamed. दूध चढ़ाए छोड़ के भूले आए थे ज़ुबान. अपनी देखे कौन मुँह अब आग करे बदनाम. बोलो कौन इंसान, बोलो कौन इंसान. तो वो पागल
प्यार मेरा, or these beautiful expensive jewels? So you tell me, which is more important, jewels or life? जलता घर घर में अलमारी है, अरे खुद जलना आसान है पर गहनों का जलना भारी। बोलो कौन इंसान, बोलो कौन इंसान? तो वो पगाली अनहर प्रेमी सही, तो वो पगाली अनहर प्रेमी सही। बोलो कौन इंसान? तो वो पगाली अनहर प्रेमी सही, तो वो पगाली अनहर प्रेमी सही। मन में मैल कुर्ता सफेद, प्रेम की टंकी और टंकी में छेद। मन में मैल कुर्ता सफेद, प्रेम की टंकी और टंकी में छेद। कौन इंसान? बोलो कौन इंसान? तो मैं पगाली अनहर प्रेमी सही, तो मैं पगाली अनहर प्रेमी सही, तो मैं पगाली अनहर प्रेमी सही, तो मैं पगाली अनहर प्रेमी सही। साथ में गाएंगे, तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी ही सही। तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही, तो मैं तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही, तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही। तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही, तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही, तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही, तो मैं पगली अल्हड़ प्रेमी सही। Thank you, Bangalore. Hava, you've been such a lovely audience. Please give yourselves a round of applause. We've had such a great time playing here. We just want to give a round of thanks. On sound, Mr. Varun Gupta. On lights, Mr. Dhruv Malik. Thank you to the wonderful team at Kanta who's really helped us out. Thank you Saloni who's taken such good care of us. Thank you Bharavi who's a good friend of mine and tech in charge. And thank you to GSW, the sponsors that make all of this possible. Just like to introduce everyone on stage. On drums, percussion, Mr. Makran Sanon. Then the very life and soul of the Avan project, the one who writes everything, writes all these lovely lyrics.
Vedisana, everyone. And the person who made Avan, I think, explore a lot more than I think it was limited to, and who's of course also a beautiful guitar player, string instrumentalist, Sumant Balakrishnan. Thank you so much, Bangalore. This was the Avan project. We're so glad we could take a little bit of your time. We're so excited for Swaratma, who's now going to perform. It's been such a pleasure to open for them, and now we'll be there with you, enjoying this amazing festival, amazing show ahead. Thank you so much. Please give it up for the Avan project one more time. You know, I think the in their name is that deep sigh my heart gave when I heard them perform. Thank you for that experience. Okay, you know, when they were doing their first bit and Vedi was talking about being naughty, there was this kutti human here right in the front. They were saying, I want to be naughty. It was the cutest, right on cue while she was talking about that. This is the 6th day of the Kanta Haba at BLR Haba, and have you enjoyed yourself so far? Are you feeling it? Yes. Okay, so apart from just feeling it, how about you do something about it? Can I tell you what you can do? Okay, one QR code will come up now. Hey, put that QR code, Ramacha. There it is. I wasn't joking, I was serious, okay? So that QR code has come up. Apart from feelings, put some money in that also. Okay. I have targets, by the way, so the next band doesn't play until those targets are met. So be generous. Okay, that's not true. They will continue to play. Also follow BLR Haba and Kanta Haba on socials. We'll take a small break for Swaratma to set up. You can do some paid puja, some nature's call, those kind of things. Back in 15 minutes.